इट जस्ट गिव्स यू अ वेरी प्रिंसेस काइंड ऑफ, इन सबके बैक बहुत क्रेजी ओवरसाइज्ड, तो फिर मैं एस या फिर एम. Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. This is me Khushi. I hope you all are doing good. This video is all about maxi dresses, summer maxi dresses. You must be seeing कि मैं ना इससे different backgrounds में shoot करती रहती हूँ. Actually ये मेरी flatmate का, मेरी friend का room है. तो ना मेरे अब it is 6:30 or 6:40 I guess, and the sun is already gone. So I'm like कि ठीक है, यहाँ पे अच्छी light आ रही है तो मैं यहाँ पे shoot कर रही हूँ. First of all, thank you so much for all the views on my last video. I had 300 and something views. I know it is like very less of a number, but still I love it and I'm really glad and grateful for all of you, for everybody seeing and watching my video. Anyway, without any further ado, let's get started with the video. So today's video is all about summer dresses, summer maxi dresses, long summer maxi dresses, and all are so Pinteresty and so beautiful, like trust me. First of all the links will be in the description box, so make sure to check the description box for all the links. You know what, the next video, I'm super duper excited for the next video that I'm going to post. The next video will be the house tour that I'll give you of the house that I'm living in right now. ये फिर से टेढ़ा हो गया है. Yeah, so I'll give you the house tour of the next video, so make sure that you're subscribing to my channel and liking all my videos if you genuinely do. ठीक है. और हाँ, मुझे इसके बारे में बताना था. Bro, there is something, so I'll tell you, there is definitely genuinely something that is triggering my skin. I don't know genuinely कि वो क्या चीज़ है जो मेरी skin trigger कर रही है. मतलब till day before yesterday my skin was all fine. It was only the marks that were left. And yesterday when I slept last night, and then I woke up in the morning and I literally had 4 bumps, 4 acnes. I don't know where did they come from, कहाँ से आया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आया. पर there is definitely genuinely something जो trigger कर रही है. I think there is raw milk that is triggering my acne. I think 8 raw milk with oats, तो शायद उससे ट्रिगर हो रहा है. तो अभी मैं करके देखती हूँ, मैं 2-3 दिन स्किप करके देखती हूँ कि शायद अगर उसकी वजह से हो रहा है तो 2-3 दिन बाद नहीं होगा. मे बी आई वोंट हैव न्यू एक्नेस प्रॉब्ली. सो यार लेट्स सी. मैं अपना पानी ले आई हूँ. चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज इसके बाद मुझे जिम भागना है एंड आई एम वेरी ग्लैड. एनीवे, पता है मेरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है मेरा जिम. मतलब बहुत ही आई एम हैविंग सीवियर बॉडी एक राइट नाउ, but still I love to go to gym. I don't know why. It's been just 3 days and I'm already in love. But anyway, let's quickly start with the video. This is the first dress, so I'll start with the very first dress that I'm wearing right now. This is like a butter yellow, very beautiful, guys. Matlab a 10 on 10 for sure. This is such a beautiful dress that I also have gifted this dress to my Masi, and she also loved it because it sits on your body so well. It falls on your body so well. Like I don't know, it just gives you a very princess kind of vibes, but in yellow, and yellow is the color of love, I feel. I mean, not I feel, बहुत Instagram दिमाग है ये मेरा दिमाग नहीं है, but it's good, right? मेरा size XS है इसमें because this is a body fitting kind of dress, so it really fits my body well in size XS. My height is, a lot of girls tend to get confused with the height and the size that I wear. So guys, my height is 5'7". My waist is 26ish, 27ish, and I wear XS in a lot of bodycon dresses, but when it comes to something I want a little oversized, तो फिर मैं S या फिर M ले लेती हूँ. बेस्ट चीज़ बताऊँ, इसका जो नेक लाइन है ना, इट इज़ लाइक this. So basically square, and I mean like ऐसे पूरा square and then round from here. And second very nice and beautiful thing about this dress is the strap adjustment that is given here. So I think in total it is a really nice dress. Let's move on to the next dress, which is this very beautiful pink, baby pink sort of color, and I truly absolutely love it. I will also add the clip of my friend wearing it. She was looking so stunning in this dress. बहुत ही प्यारी लग रही थी वो भी. और भाई ये इतनी सुंदर है, मतलब this is very princessy kind of dress with like a bow sort of situation on the front, and I think yeah, very beautiful pastel pink sort of color. मेरा size इसमें भी XS है, तो आप लेना, बहुत appropriate. Again 10 on 10 का fabric भी बहुत अच्छा है, very breathable, very nice. And I think in general जो ये वाला fabric होता है ना, जो fall करता है आपकी body पे, ये कॉटन नहीं होता है. I mean in general summers में cotton is the most what do you call, cotton is the most comfortable fabric, right? But this is not cotton. This is, अब अगर कॉटन होगा तो वो फूला फूला रहेगा, इट विल नॉट फॉल ऑन योर बॉडी. बट कम ऑन, फैशन में ये सब चीज़ें नहीं देखते गाइज.
ठीक है. Let's move on to the next dress. Very very beautiful. I truly love it. मुझे लग रहा है कि इसमें साइज में एक थोड़ा सा बड़ा ले लेती तो शायद ये मेरे ऊपर और अच्छी लगती. But this is like a white color की dress from Savannah. The fabric is georgette, but I absolutely love the detailing of this dress. Like, can you just see all the stars in the front and the so basically ये क्या है कि ये एक body suit है. ठीक है, एक body suit है जिसमें shorts हैं, and then there is another fabric on top of it which is like white georgette fabric, which is like flowing on your body. Very unique, very beautiful, perfect for all the summer vibes, perfect for all the beach sort of vacation. So yes, this video, all the dresses that I'll be showing you today, all are perfect for your vacation, all are perfect for your beach vacation, especially if you are planning to go to Goa, Bali, Vietnam, Thailand, etc. You should definitely have at least one of these dresses. कोई नहीं, दीदी आई थी नीचे से. Let's move on to the next dress, which is like green and beige sort of color. Back is absolutely stunning. The back is to die for. A lot of you must be thinking, what am I wearing underneath these dresses? So yellow इस वाली dress में I'm wearing like a strapless bra. सेकेंड जो पिंक वाला है, पिंक वाले में आई एम वेयरिंग अगैन अ स्ट्रैपलेस ब्रा बिकॉज वो बहुत ही एडजस्टेबल बैक के साथ आती है. और जो ये वाली है इसमें आई एम जस्ट वेयरिंग निपल पेस्ट्रीज एक्सेट्रा एंड यू डोंट रियली हैव टू वेयर अ ब्रा बिकॉज एनी वे इट विल बी टाइड अप एट द बैक. So yeah, I'll keep all the links in the description box, so make sure that you check them out. Let's move on to the next dress, which is this black and beige. Oh my god, this dress, the print of this dress is really stunning. I absolutely love the print of this dress, guys. मतलब इसका जो print है ना वो ऐसे कैसे बताऊँ, बहुत ही दुबई वाइब्स दे रहा है, काफ़ी tropical vibes, but at the same time very luxurious. I think very classy and very tropical sort of dress this is. And the back of this dress is to die for. I truly absolutely love it. Most of the dresses that I'm showing you today, in सबके back बहुत crazy हैं. The white one also that I showed you, I think उसका भी back is backless. So yeah. चलो, let's move on to the next dress, which is this blue and white gingham print dress. There is another color as well which is available, which is red or white, or I think pink and white in this same dress. ये वो है, क्या बोलते हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेस है. हाँ, ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. वेरी व्हाट डू यू कॉल, वेरी ब्रिजिटन ब्रंच सॉर्ट ऑफ वाइब्स. या दिस इज़ वेरी ब्रंच काइंड ऑफ ड्रेस. इसमें ना पॉकेट्स हैं और कम ऑन पॉकेट, और इसमें भी ना इलास्टिक है तो आपको अच्छे से फिट हो जाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा. अगैन मैंने इसमें भी स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी. अगर आपको चाहिए तो मैं एक स्ट्रैपलेस ब्रा का लिंक डाल दूंगी जो मैं हमेशा और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. सो आई कैन ऐड दैट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू डू नॉट हैव टू फाइंड इट एल्सवेयर. नेक्स्ट इज दिस वेरी ब्यूटिफुल कलरफुल सॉर्ट ऑफ ड्रेस. पता है जब ये स्टार्टिंग में ऑर्डर किया था ना मैंने, जब ये आई ड्रेस तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसी लगेगी, पर फिर जब मैंने इसको पहना, यार ये काफ़ी यूनिक है. दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑल द बीच वेकेशन आउटफिट. सो इफ़ यू आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर बीच वेकेशन, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. यार ये क्या है, ये पूरा टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है इससे. हाँ, तो ये ऐसी ड्रेस है, इफ़ you'll go out and wear this dress, I think people will genuinely love it and people will give you compliment on this. Yes, that is it for today's video. I really enjoyed filming this video. I hope you enjoyed it too. Please let me know in the comments if you love it. चलो ठीक है, तब तक bye bye, take care, I love you. Please subscribe to my channel if you really want to see all the videos, all the fashion videos, and do not want to miss any of the fashion recommendations. And second, do like my videos if you really like them.